Yeah, good morning, all the traders out there, and welcome to our pre opening session. So, we follow a process which is before we decide what to do, let's have our thoughts and perceptions very clear what's happened around us. So, I'll go before start and read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Yeah, Daily Trader, good morning. Great to see you in the sessions. Are they helping you, sir? Yeah, great to know that. Just give me a minute. I'll bring my screen. Yeah. So, first, we go and have a check at what's happened around the globe when we were asleep. Right? And look at some of the headlines. The better compilation is in our Substock Head Start, but I'll introduce you to that today also. So, US markets yesterday, the Dow Jones and the S&P were both closed in red. दोनों uh, एक 1.25% डाउन बंद हुए. So there was some amount of selling in the US markets. Nasdaq the tech was 2% down. So काफी गहरा कट है इधर. So at the open, let's see what Asia is doing. So now the futures are mildly in green. So it's called flat. No big movements out there. But I'm more interested in Asian markets. See, are we basing our analysis? No, we are just having a 360-degree view upon what's happened around the globe. Because if you're doing a day trading of that particular day, the volatility or the short-term directions do come in from here momentarily, right? So Bovespa, which is Brazil, part of emerging market, is down close to 2000 points. Nikkei is 570 up, more or less flat. Fine. So there is a overnight hang of the cut in US markets. So now let's go back to our stocks. So if you notice yesterday, for the last 3 days, what we have been saying is हम बोल रहे कि market में coiling action है. अभी आपको coiling action समझ में आ गया होगा. Am I right? Coiling action is price doing nothing, daily gapping up and closing there. And coiling actions are very notorious because जैसे ये coil टूटता है, coiling को we also call a chart pattern called a rising wedge. Right. So that was a rising wedge. And the moment a coiling action breaks, आपको एक निजक reaction देखने मिलता है always, right? So now that has happened. It's behind us. Market 50 दिन के average भाव पे खड़ा है. और what we have been saying is that market में दो gap है. ये Trump tariff gap, and then when this is a breakout small little gap, fine. So what happens, क्या होता है ना, market जब एक बार रुक जाता है, थक जाता है, there is a loss of momentum or further buying is not coming in, market's tendency is to fill this gap, right? So then this gap becomes the support level for the downswing. Downswing means a corrective decline. तो यहाँ तक मार्केट आने का गुंजाइश है. That's what we have been analyzing for the last 3 days. And always take a note of that. What is the current chart pattern which is going on? Right? Always आपको कोई chart pattern नहीं मिलेगी, but when you get, act on it. So now we are into this gap support 25,700 से लेके 25,500 तक है. So market अभी एक tendency रहेगा, इस पे dip करेगा. And Nifty, I would put it now as a falling channel like this. ये trend line established है, right? So we are in for knee-jerk reactions further. And 50-day average has been tested. 50 दिन का जो average है वो important price action रहता है. Average रोज रोज नहीं आते, but when they are crisscrossing, जब भाव 20 और 50 के आसपास crisscross करता है, तो आज की तारीख में जैसे आपको वाइल्ड स्विंग्स और वॉलेटिलिटी मिल रही है, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, ये कंटिन्यू रहेगा. मार्केट हैज येट नॉट सेटल
after the big gap up. So it's just trying to do some shakeouts or some corrective of that big move over the 2 days. Right? So ये गैप का एक सपोर्ट रहेगा, वहां पे मार्केट टेस्ट करने आएगा. And resistance, what we have been seeing for the last 5 days, if you can remember, एक लक्ष्मण रेखा जैसा शॉर्ट टर्म में आ गया है, which is at 26,000 somewhere around here. Open interest distribution भी वही बता रहा है, and multiple test it has not crossed. तो यहाँ पे एक ब्रीफ वॉलेटिलिटी जोन आपका बन गया है 26,000 से लेके 25,500 तक, जो कि 500 पॉइंट का है. अभी हम लोग मिडवे पे, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेस आउट करेगा द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स. आफ्टर दैट लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी बिकॉज निफ्टी में जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो आईटी इंडेक्स का भी है, और भी काफी इंडाइसेस है जो अभी एक नरमी के दौर से गुजर रहे हैं. दे आर पासिंग इट थ्रू अ डल फेज और अ डिक्लाइनिंग फेज. सो दैट्स वो हमें देखने मिल रहा है निफ्टी में. निफ्टी इज डाउन बट बैंक निफ्टी इज होल्डिंग आउट. ओके, बैंक निफ्टी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और यहाँ पे भी एक क्लियर लॉस ऑफ मोमेंटम है. क्या बैंक निफ्टी भी एक गैप भरने आएगा? It is possible, but right now the possibility will open only when it breaks the consolidation band. अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे 50 दिन का एवरेज है, दैट्स अ 50-day मूविंग एवरेज. एवरेज आपको ध्यान में रखना ऑलवेज एज अ ट्रेडर, राइट. एंड हाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं ये हाई नहीं लूंगा, ओपन ले रहा हूँ. तो बैंक निफ्टी भी ये दो रेंज में 61,500 और 60,000 1500 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में फेज में गुजर रहा है. एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन देयर फॉर अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर. जब हम शॉर्ट टर्म स्विंग की बात करते हैं तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 days. एक वीक के अंदर का जो टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म और अ स्विंग ट्रेड सेटअप. सो ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे एक बहुत कॉम्पैक्ट कंसोलिडेशन है. इट्स वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, राइट. आपको इस पे ध्यान देना, ऊपर वाले बॉक्स पे द कॉम्पैक्ट कंसोलिडेशन. और जब तक ये हाई नहीं निकल रहा बैंक निफ्टी का, ये हाई कौन सा 60,892. सो इट्स अराउंड 60,900. So let me put it down. Till 60,900 नहीं निकल रहा, the consolidation will continue, or as a trader we have no way to say whether it will break up or down. Considering कि market एक overbought zone पे है, let's trade this range only. 69 से लेके 64, 500 पॉइंट का रेंज है. If it breaks on the upside, एक coiling price action यहाँ तक भी जा सकता है. If it breaks on the downside, you will see the fill of the gap. Nifty ने gap भर दिया, right? So Nifty is relatively weaker if compared to Bank Nifty. अगर relative strength की बात कर रहे हैं दोनों इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स में ज़्यादा नरमी है तो वो निफ्टी में, because of the component of IT. So आपको ये रेंज ध्यान में रखना है, ब्रेकआउट्स ध्यान में रखना है. In between this range, I will be on the negative side, right? Now, let's from here go to IT index. See, IT index में एक अच्छा गिरावट का माहौल चल रहा है. इसने 50 दिन भी तोड़ दिया. It has closed below that. एक relentless selling वाली बात है. So IT index is down and out. आज की तारीख में ये लो पे खड़ा है, right? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत जन सोचते बहुत गिर गया तो लेते. So I don't comment on trades. Whatever we do is for educational purpose. और इसने इसको it has opened up the possibility of it testing somewhere around that. So IT index the decline is continued और medium term में एक काफी एक formation आ गया IT index में जो कि ये डबल टॉप का है. So IT index में जो नरमी चल रही है it is likely to continue because previously भी हमने देखा ये लो को हम pivot बोलेंगे. Pivot मतलब सबको दिख रहा है and it is very prominent, right? वो पिवट लो के नीचे बंद हुआ IT. तो IT अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बार यहाँ पे आके इट गेव अ बाउंस, वापस से सेम लेवल तक आया, इट गेव अ बाउंस,
Fine. Now, this low, it has closed below this IT index. तो आईटी इंडेक्स में सी इतना जोर से कोई भी इंडेक्स गिरता है, इफ इट ब्रेक्स फ्रेंड्स, इट बिकम्स ओवरसोल्ड. सो बीच में एक दो दिन कहां से बाउंस आ जाएगा, इट्स टफ टू से. बट वी एज अ ट्रेडर आर फर्स्ट फोकस ऑन द डायरेक्शन एंड द ट्रेंड, एंड देन on the micro time frame for a pullback. Right now we are just focusing on the trend, so it's open up the possibility of IT index coming down till here, so that will see a pressure on the nifty itself. So trade accordingly. So IT index मुझे highlight करना था आज. Now let's have a look at the open interest positions. So so that's how we are doing. हमने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, ग्लोबल इंडाइसेस देख लिया, विक्स देखेंगे. सेक्टर में हमने आईटी इंडेक्स देखा, और मैं आपको सबस्टैक पे भी ले जाऊंगा. एंड आज शाम को 4:30 we have a webinar on single candle patterns. Make sure you are there in the webinar. How to join it, I'll just help you out there. So go to the stocko.in platform. Over here, you will see the link Candlestick Analysis. You can go and register. It's today only. आज की तारीख में है. All these webinars are for your educational purpose only. Right? So it's today at 4:30 to 5:30. Those who have not registered, I'll just put the link in the chat. You can go and register. Right? That. So we are going now into our stock options. So I'll go to options data. एक बार option को भी glance ले लेते हैं, where the OI buildup is, because that is a reference point in such markets. So I go to OI statistics. अभी निफ्टी ATM पे तो always call और put में OI buildup रहेगा by the straddle guys at 25,800. Right? तो अभी आप देखिए तो 25,900 और 26, ये बहुत टफ रेजिस्टेंस है क्रॉस करना. 26,000 पे 1.68 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, विच इज टू हाई. अभी ये पोजीशन थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है. इफ यू सी शिफ्ट इन द सेंस, उसके 100 पॉइंट नीचे भी राइटिंग स्टार्ट हो गया, विच इज 1.13 करोड़ ऑन 25,800. सॉरी 25,900. सो मोर और लेस हमें दिख रहा है कि 25,900 पे बहुत भारी रेजिस्टेंस है. पहले जो हम 26,000 का आंकड़ा लेके चल रहे थे, दैट हैज नाउ कम डाउन टू 25,900. कीप अ वॉच ऑन दैट फॉर योर रेजिस्टेंस. अगर पुट साइड में देखें तो इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वी कांट पिन पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे पुट का मैक्सिमम ओआई बिल्डअप है. इट्स ऑल स्कैटर्ड बिटवीन 25,700 25,500. तो 25,500 से 25,700 के बीच में रखते हैं अभी, एंड दैट्स व्हाट आवर रेंज इज आल्सो शोइंग. सो एक मोटा मोटी यहाँ से भी वी गेट अ गेस्टिमेट ऑफ रेंज आउट देयर, बट ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस डू चेंज ऑन अ लाइव बेसिस आल्सो. सो आपको स्टॉको इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म के इंस्टा ऑप्शन फीचर्स में आके ये रियल टाइम पे ट्रैक करना है. और अगर पीसीआर की भी बात करें, मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो अगर कॉल में आप देखिए तो 17.70 करोड़ है. सो देयर इज अ हेवी बिल्डअप ऑन द कॉल साइड, दैट्स व्हाई मार्केट इज अंडर प्रेशर. पुट साइड में 10.92 करोड़ है. तो पीसीआर इफ वी सी देयर आर मोर ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स, एंड आई वुड से इट बिलोंग्स टू द सेलर्स, राइट. 0.62. सो मार्केट में प्रेशर रहेगा, लेट्स एक्सेप्ट दैट, एंड दैट्स हाउ मार्केट्स आर पोजीशन्ड. ऑन द बैंक निफ्टी साइड, श्योर आई विल हैव अ चेक. बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो ओआई स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ा ओआई बिल्डअप पुट का है 60,000 पे, और कॉल का है 61,000 पे, मिडवे पे. सो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज डिफाइन कर दिया फ्रॉम द करंट प्राइस, 500 पॉइंट्स अप, 500 पॉइंट्स डाउन. रेस्ट वी आर नॉट एबल टू सी एनी बिग टावर्स. आपको यहाँ पे पुट में बड़ा टावर्स देखना, कॉल में बिगेस्ट टावर देखना. वहाँ पे यू हैव टू फ्रीज इट. Fine till it's not getting crossed. Let's accept this is my resistance. So wish you all the best for today's trading. We are better planned. We are better prepared. Oh, VIX we have to see. I have missed the VIX. I'll just go back to VIX. VIX हम इसलिए देखते हैं कि वॉलेटिलिटी कौन से साइड खुल सकती है. अगर रेंज में है तो VIX का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. So VIX में से मैं एवरेज अभी हटा देता हूँ.
And remember, VIX and the index are inversely related. VIX भी देखिए तो एक range पे खड़ा है. Getting my point? VIX from here on, there are only two options. अगर निफ्टी में बड़ा डायरेक्शन आना, it breaks this and again come back to this support level on the downside जो 9 का फिगर आ रहा था पहले भी we have checked it out, or let it say it breaks on the upside and goes to the budget days highs around here, right? So consolidation and VIX is also going on. VIX dipping down a bit. दिख नहीं रहा as a traders. Let's say we don't act on gut feels, we just go by the data. If it's in a range, accept it's in a range. अगर यहाँ पे breakout ऊपर में होता तो that would be negative for the broader markets. So that's all from my side. All the best in today's trade. So we are going to meet again at 3:45 for post market session, and we are going to be there at 4:30 for a webinar on candlesticks. Thanks. Have a nice day, everybody.